Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Sushma. Thank you, Manoj, and thank you, Rajesh. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic share indices ended on a flat note. Sensex settles at 64,942 points. Nifty holds above 19,400 points mark. Oil prices declined about 1.75% today. US benchmark West Texas Intermediate slipped below $80 a barrel for the first time since August. And gold and silver were trading down at the multi-commodity exchange for December contracts. घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार, लेकिन प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास परिवर्तन के हुए बंद। सेंसेक्स 64,942 दर्ज हुआ, निफ्टी 19,400 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई कच्चे तेल की कीमत में 1.75% की गिरावट। अगस्त के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से नीचे आई। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति होने वाले सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार तो उतार चढ़ाव के बीच हुआ, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी अंत में मामूली नुकसान के साथ बंद हुए, यानी कुल मिलाकर फ्लैटिश टोन देखने को मिला। जबकि छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों की लिवाली अच्छी खासी दिखी और दोनों प्रमुख सूचकांक मिड कैप और स्मॉल कैप तेजी के साथ बंद हुए। चीन के निर्यात में अनुमान से बड़ी गिरावट संबंधी खबरों का वैश्विक बाजारों पर असर दिखा। कमजोरी के संकेत भारतीय निवेशकों को मिले, जिससे घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की कंपनियों में वह तेजी नहीं दिखी जो कि होनी चाहिए थी। कारोबार के अंत में बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 16 अंक घटकर यानी मामूली नुकसान के साथ 64,942 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5 अंक नीचे आकर 19,407 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो वहां लिवाली दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स कारोबार के अंत में 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। The key domestic share indices ended on a flat note in a volatile session today amid negative global sentiments due to more than expected fall in Chinese exports, highlighting a continued slowdown in global trade. At close, the Sensex was down 16 points or 0.03% at 64,942 and the Nifty was down 5 points or 0.03% at 19,407. In the broader market at the BSE, mid-cap index rose 0.5% and small-cap index added around 0.40%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 companies appreciated, while those of 14 companies ended in red. Sun Pharma climbed about 2%, NTPC and SBI rose over 1% each. On the other hand, Bajaj Finance fell around 0.8%, JSW Steel and Reliance Industries lost around 0.6% each, and ITC slipped over 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors ended in green, while 5 sectors closed in red. Healthcare and oil and gas sector logged about 1.10% gain. Utilities sector jumped over 0.5%. On the other hand, realty index lost about 1.20%. Auto index declined around 0.20%, while consumer durables and metal sectors ended marginally lower.
The overall market breadth was positive as shares of 1,992 companies appreciated, while those of 1,688 companies declined. A total of 133 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ। उधर डॉलर की तुलना में दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.44% की बढ़त लेकर 105.67 पर चल रहा था। सुषमा जी, बाजार में हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो कुल मिलाकर लिवाली का सिलसिला दिख रहा है। अधिकांश कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई हैं, लेकिन मामूली घाटे में अंत में सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए। वैश्विक बाजारों में दूसरी ओर गिरावट का हम टोन देख रहे हैं। अमेरिका में कल गिरावट हुई, यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भी गिरावट है। तो अपने बाजार में जो यह स्थिरता है या कह लें कि रेजिलियंस जिसे कहते हैं, उसके पीछे मुख्य कारक क्या और आज के कारोबार को किन अर्थों में ले रही? देखिए, अभी तो आपने कहा कि वैश्विक बाजारों में गिरावट आई है, तो ये जो माहौल है भारतीय मार्केट में, इसका असर तो पड़ा ही है हमारी मार्केट में। अभी 3 दिन से रैली चल रही थी, तो अब मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात, दो वजह हैं जिससे मार्केट थोड़ी सी अभी गिरी है। इसको मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गिरी नहीं है, इसको फ्लैट ही कह सकते हैं। और पहली बात तो ये है कि 3 दिनों की रैली के बाद प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और दूसरी बात ये है कि जो वैश्विक बाजारों का जो असर है वो पड़ रहा है हमारी मार्केट में। उनका वही माहौल जरूर हमारी मार्केट के ऊपर असर होता है, हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस वक्त जो चीन का जो निर्यात है उसका गिरना, उसका असर कई मार्केट के ऊपर हुआ है, और हमारे देश में भी इसका असर हुआ है। तो ये सारी जो बातें हैं, मेरे ख्याल में मैं ये नहीं समझती कि आज की जो गिरावट है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनेगा या मीडियम टर्म ट्रेंड भी बनेगा। ये एक थोड़ा सा पॉज है हमारी मार्केट में, जो अभी तक काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, बुलिश ट्रेंड चल रहा था। Sushma, at a time when US bond yields are around 4 to 5% and threatening to go higher, do you think one should not be really looking at hitting sixes right now? And do you think it's time to be more conservative in terms of future outlook? And what would your advice be to the investors? Should they be aggressive or hold on in terms of investments? Well, you see, as far as India is concerned, investments within the country, I think one can say with confidence that the scenario is likely to improve. If we talk about all the indicators that are coming in, all the reports are showing that demand is rising in the run-up to Diwali. The reports have come in about passenger car sales reaching highs, high-end value products going up, FMCG products rising at a rapid pace. Even rural consumption, which had not been picking up to the extent desired, has also gone up according to the latest data for, I think, even August and September. So there is a general trend of recovery and upswing in demand within this country. But if you talk about the US, bond yields there are affected by the fact that, despite the fact that the US Fed has given a hint that, we are going to pause in the rate hikes, in the aggressive rate hikes, the fact is that they have not been able to bring down inflation to the target level of 2%. Added to that has been the Israel-Hamas conflict, the problem about energy prices, which of course are now cooling, but had been rising considerably. So bond yields had suddenly gone up a while back, and they are still at relatively high levels, which means that people are selling bonds in anticipation of more interest rate hikes, so that the value of their bonds would go down. So therefore, it's a different scenario when you look at the US market and other foreign markets. So
there are a lot of factors which are in favor of India. One being the strong macroeconomic growth amidst the slowdown in major global economies, including the US, China, and Europe. What is your outlook for India going forward? Well, I think we can actually talk about the latest the latest improvement in ratings given by the investment agency Fitch Ratings. Fitch Ratings has raised the outlook for India for financial year 24, I think from probably 5.5 to about 6.2%. And that itself shows the confidence of foreign investment agencies in the economy. So looking forward, of course, I think we are, of course, it's a given that we are the fastest growing economy in the world. At the same time, for an emerging economy like India, which seeks to bring itself out of poverty, we have to remember that we should really be looking at an even higher growth path. We should be looking at 7 to 8% to pull ourselves out of poverty, to get into the status of a developed economy. This is what people are talking about now. So the outlook is definitely brighter than probably the rest of the world. But I think our ambitions should be higher. We should be at an even higher growth path. So, Sushma, in the given Indian context, please help us to understand the inflation trend, which so far looks really comfortable as far as the RBI bandwidth is concerned. Yes. Also, elections are coming and a lot of freebies have been given. Talking about that in the context of the fiscal deficit and also the food subsidy, how much of it is a concern for you? And what are the factors RBI might want to consider, if not a rate cut, but a longer rate pause? Well, I think the thing is that in general, when you look at freebies, when you look at the kind of largesse that is given to voters before elections, this is something that we should not encourage. For instance, things like giving free power or free water, and even though free food grains was very essential during the COVID time, it is whether it is required now. Are people still feeling the same sense of distress, or is it essential? I really am not very aware what studies have shown about rural distress right now. So we need to consider freebies in the context of their requirement, and some of them may be essential. Like I'm talking about food grains, for instance. There may be a requirement in rural areas because now also there are reports that perhaps the demand for the rural employment programs has gone up, which means that there is some distress in the rural economy. So perhaps there is a requirement for extending food grains. There could be a requirement for greater subsidy of food grains. But in general, as I said, these kind of freebies, as I said, in terms of free food, but then of course we are talking not free food, free water and power, and then of course the commitments that are being made in many states that we will give a certain sum to the head of the family. If it's a woman, we'll give some 1,000 rupees or 2,000 rupees. Now, all these need to be put in the context of the state's finances. I mean, can the state bear this kind of fiscal burden? Coming to food subsidy has become extremely large. I right now do not recall the budgetary figure. It has become very large, but as far as food subsidy is concerned, this is something that we have to live with because it is an essential requirement. Secondly, the central government is fairly well placed this year to meet the demands of such subsidies because of the fairly robust revenue inflows. You know about the GST inflows. The latest data, I think, shows for the last month was 1.7 crores.
So the inflows have been fairly robust. At the same time, expenditures are also high. I mean, we cannot forget the cost of oil, for instance, it has been going up this year, and we have a very heavy burden on that. But the central government has a certain amount of leeway and to deal with this kind of largesse. State governments do not have so much leeway, and I think they need to be more careful. सुषमा जी, एक बार फिर से हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे घरेलू शेयर बाजार के प्रदर्शन पर। आज 20 में से 15 सेक्टर लाभ के साथ बंद हुए हैं, बस 5 में गिरावट देखने को मिली है। हम ऑटो सेक्टर की ओर आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे। वहां हम 0.2% की गिरावट देख रहे हैं। जो अक्टूबर महीने के बिक्री के आंकड़े आए हैं उसमें कारों की बिक्री में तो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही जो गाड़ियां हैं, पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं, उनके लिए जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लंबी अभी भी लगातार दिख रही हैं। लेकिन दो पहिया वाहन हैं, उनकी बिक्री में गिरावट दिखी है। ग्रामीण भारत की हमने चर्चा की, विभिन्न क्षेत्रों में आपने सब्सिडी की बात की, तो दो पहिया वाहन में गिरावट क्या दर्शा रहा? क्या लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ रही है जिससे वो गाड़ियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, या वहां जो क्रय शक्ति है उनकी घटी है? क्या दर्शा रहा है? देखिए, दो पहिया वाहन की जो उत्पादन है उसका 50% शायद ग्रामीण इलाकों में जाता है। 50% की कंजम्पशन ग्रामीण इलाकों में जाती है। और अगर दो पहिए वाहनों की जो बिक्री है, हालांकि ये आपने लेटेस्ट डेटा दिया होगा, जो लेटेस्ट डेटा पहले मैंने देखा था वो दिखा रहा था कि शायद वो बढ़ रही है, लेकिन अब जो ट्रेंड है वही दिखा रहा है, मतलब 2 सालों से, कि बहुत सबड्यूड ट्रेंड है दो पहिए वाहनों की। ये दर्शा रहा है रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण इलाकों में जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी शहरी इलाकों में है। तो ये जो रूरल इकोनॉमी की जो डिस्ट्रेस, अभी मैंने बात की फूड की रिक्वायरमेंट, रूरल इकोनॉमी की डिस्ट्रेस, अभी भी कोविड के बाद वहां पर जरूरत होगी शायद इन फ्री फूड ग्रेन्स की। ये दो पहिए वाहन क्यों नहीं, इनकी बिक्री इतनी क्यों नहीं हो रही जितनी की 4 पहिए वाहनों की? वो इसलिए है कि ऑब्वियसली परचेसिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। और इसका ये मेरे ख्याल में हमें जरा गंभीरता से ये विषय को देखना पड़ेगा कि ये क्यों है और क्यों इतना गैप हो रहा है अपने शहरी इलाकों और ये ग्रामीण इलाकों में। जी, ये जो वाइडनिंग गैप है वो मुझे लगता है कि इतना अच्छा नहीं है। अगर आप 4 पहिए वाहनों में भी देखें तो सबसे महंगी गाड़ियां की बिक्री हो रही है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, एसयूवीज वगैरह, उनकी बिक्री हो रही है। जो एंट्री लेवल व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री थोड़ी कम है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल में कुछ असेसमेंट किया जाना चाहिए, और जहां जो पॉलिसीज हैं उनके थोड़ा सा उनकी कुछ फोकस होना चाहिए रूरल इलाकों में। जी, Sushma, going forward, the key risk factors that may influence the market in the near term include escalation of tensions in the Israel-Hamas conflict. You mentioned about it. The rising interest rates and the political instability or stability. Why I'm mentioning this is because it will be critical for the bulls to ride the market in a new high if the government is stable government, and that will ensure the continuity of the policy reforms. What's your take on the risk factors that I'm mentioning here? You're referring to the geopolitical conflict for the market, rising interest rate. Yes, market's point of view. So yes, the first of all is the geopolitical scenario. This is a major factor. First, we now have 2 major areas of conflict in the world. This is something of great concern, and the Ukraine and Russia conflict actually had more repercussions in economic terms because both countries were very large exporters of food grains and metals and various other commodities.
In the case of Israel and Hamas, we don't have that factor. They are not even oil producers. So, but even so, the ripple effects of the Israel-Hamas conflict on the Middle East, which is the largest, the region for oil production, is something that has yet to be seen. That impact has not yet been felt, but it can. So this is definitely a big risk factor. I'm sorry, what was the second thing you mentioned? I think you covered pretty much everything. We'll move on to our next story. Oil prices declined about 1.75% today as signs of decreased energy demand is visible. U.S. benchmark West Texas Intermediate slipped below $80 a barrel for the first time since August. In the intraday trade, Brent crude was trading at $83.69 per barrel, while the U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $79.48 per barrel when reports last came in. Now, Sushma, this seems to be this augurs well for India, $79.48. India will be very happy to have this rate because as a consumer like China and winter demand worries are taken care of, and the impact of Saudi Arabia and Russia extending out output cuts have been offset, then how do you see the prices going forward? Where do you see them landing finally? It's very difficult to predict oil prices at this stage because for the last 1 year they have just been extremely volatile, and there have been so many extraneous factors that you simply cannot predict. For instance, we could not predict the Israel-Hamas conflict. I mean, because of that, suddenly prices went up. Along with it, we had, as you mentioned, the fact that Saudi Arabia and Russia decided on voluntary cuts of 1.3 million barrels per day, which they have now extended till December. So these are things which you really cannot predict. Of course, to some extent, you can be rest assured that OPEC will try to raise the prices, or push the prices up. But other factors are difficult to estimate at this point. Other investment agencies, research organizations are like a bank like Goldman Sachs and Citibank Research Associates have both said that probably oil prices will reach about $100 per barrel probably by the end of 2024. Now, it's very risky. I would say even their predictions are very risky. Right now, prices have fallen contrary to expectations because of the expectations that demand from China is likely to go down. And secondly, there are recessionary trends in the European zone, and therefore demand all round is going to go down. So despite Saudi Arabia and Russia making their voluntary cuts, the market has still shown a softening trend. So I will not make any predictions. Okay. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और तेल के बाद चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 440 रुपए घटकर 60,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर दिसंबर में ही आपूर्ति वाली चांदी 1,372 रुपए घटकर 70,745 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों पर ध्यान दें तो सोना कमजोरी के साथ $1,970.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी कमजोर होकर $22.61 प्रति औंस के स्तर पर चल रही थी। सुषमा जी, यहाँ पर तेल के दामों में भी हम आज नरमी देख रहे हैं और सोने चांदी के दामों में भी नरमी देख रहे हैं, वैश्विक बाजारों में भी और घरेलू बाजार में भी। सोना अब यहाँ से किस दिशा में जाता दिख रहा आपको? पिछले कुछ सत्रों में कह लें कि हमने अच्छी खासी बढ़त देखी सोने के मूल्यों में, अब यहाँ से कहाँ जाता दिख रहा? देखिए, अभी तो हालांकि नरमी इस वक्त दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल में अभी हार्डनिंग ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो वैश्विक तौर पे अगर आप देखें, जो जितनी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। गोल्ड, जैसे हमने बार बार कहा, एक सेफ हेवन एसेट है और इसी के पास लोग जाते हैं जब कोई कलामिटी होती है। तो मेरे ख्याल में इसकी नरमी शायद टेम्पररी फेज है। और हालांकि
दिवाली सेल्स जो हैं जो जौहरी हैं वो कह रहे हैं कि इनकी सेल 20% और या 25% अभी बढ़ रही है इस साल दिवाली के रन अप तक। तो मेरे ख्याल में ये इसका हार्डनिंग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर बिकवाली आज तेज रही है। बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.4% लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7% घाटे के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की कमी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.3% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट ही दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.3% नीचे चल रहा था। लंदन का FTSE 100 0.05% घाटे में था। फ्रांस का CAC 40 भी 0.6% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Major US indices rallied marginally yesterday as last week's strong rally continued on the first day of the new business week. The Dow Jones Industrial Average rose 0.10%, the S&P 500 added 0.20%, and the Nasdaq Composite Index climbed 0.30%. Sushma, let's decode the current trend of the US bond yields and also the kind of data that we are seeing that is coming from the US market, which is better than expected, but somehow again not signaling a rate cut scenario. How would you understand and explain this to our listeners? Well, it's very difficult to explain to the listeners, except for the fact that the US Fed is keeping a very tight, close watch on inflation, and they are indicating that they are not going to stop till inflation comes down to the expectation of 2.5%. So I think their firmness that is probably rattling the market. So don't you think the bond market also has somehow cooled down from 5 to 4.5%? Do you think the consumption and spending should be a concern going ahead for the US in terms of numbers and data? I think consumption is fairly good in the US. I think most of their economic numbers are really quite positive. I think the only area where they have a weakness is inflation. So, in fact, surprisingly, the US economy has very strong economic indicators right now. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत कोरिया कारोबार भागीदारी फोरम की छठी बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंध पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग और आंतरिक कारोबार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की महत्ता पर प्रकाश डाला। श्री सिंह ने कहा कि दुनिया में चल रहे विभिन्न भू राजनीतिक उतार चढ़ावों के बीच दोनों देशों के मैत्री संबंध कारोबार के स्तर पर मजबूत बने रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से अब तक कोरिया की कंपनियों ने भारत में $5 अरब 60 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्ष 2030 तक ये बढ़कर $50 अरब तक पहुंचने की संभावना है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. The key domestic share indices ended on a flat note. Sensex settles at 64,942 points. Nifty holds above 19,400 points mark. Oil prices declined about 1.75% today. US benchmark West Texas Intermediate slipped below $80 a barrel for the first time since August. And gold and silver were trading down at the multi-commodity exchange for December contracts. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is